अप्रोचेस पे वक्त और ज़्यादा लगेगा, मगर इसकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो वर्कर्स अंदर हैं उनको राहत पहुंचाई है, उनको असिस्टेंस मिल रही है और हर तरीके से उनका वेलफेयर देखा जा रहा है और उनकी फैमिलीज को एश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर कुछ और वक्त लग गया तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए और वो सब अंदर जो हैं तैयार हैं उसके लिए। जहां तक इस अप्रोच का सवाल है, आप देख रहे होंगे, खुद भी आप चैनल्स के ऊपर देख रहे होंगे कि वहाँ से बहुत आश्वासन आ रहे हैं कि अगले 2 घंटे में, दिन के शायद बीच दिन में या आखिरी लास्ट लाइट शाम तक या कल सुबह, सब लोग टाइमलाइन लगा रहे हैं इसके ऊपर। और मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये ऑपरेशन जो होते हैं ये लड़ाई की तरह ऑपरेशन होते हैं, इनके अंदर टाइमलाइन कभी नहीं लगा जाती, क्योंकि लड़ाई के अंदर भी आपको काम सामने मालूम नहीं कि दुश्मन क्या करने वाला है। इसमें आप समझिए कि जमीन जो है आपका दुश्मन है, हिमालयन जियोलॉजी वो है, दुश्मन है। जो टनल कोलैप्स हुआ है उसके अंदर किस एंगल से गर्डर गिरा है, किस एंगल से कंक्रीट गिरा है, किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। और यही चीज हुई है कल रात को, जब अंदर अगर गया है तो उसको एक गर्डर मिल गया और गर्डर को पार नहीं कर पाया, तो फिर पूरे जो रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया गया ऑगर को निकालने के लिए, अंदर ऑक्सीएसिलिन टॉर्चेस भेजने के लिए, उसके बाद ऑक्सीएसिलिन टॉर्चेस से उनको गर्डर्स को काटने में। इस सब चीज में वक्त बहुत ज्यादा लगता है और कोई ये नहीं कह सकता कि 2 घंटे में हो जाएगा ये। तो और ये काम बड़ा आर्डुअस काम होता है, इसके लिए स्पेशलिस्ट जाते हैं अंदर। जो इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जब ऑक्सीएसिलिन के साथ आप काम कर रहे हैं वहां पर 1.5 घंटे का सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है ऑक्सीजन का। जब वो 1.5 घंटा खत्म हो जाता है और आपका काम पूरा नहीं हुआ है तो आपको बाहर निकलना पड़ता है और दोबारा नई ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। तो ये काम एक एनक्लोज्ड स्पेस में, आप समझ लिए तकरीबन सबमरीन की तरह, सबमरीन में तब भी ज्यादा स्पेस होती है, ये एक पाइप के अंदर हो रहा है ये काम। तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौती वाला काम है ये। तो इस पे हर वक्त ये उम्मीद रखना कि अगले 2 घंटे में हम निकाल लेंगे, ये मैं समझता हूं कि सरासर गलत है। इससे क्या है कि वर्कफोर्स के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है। और आपको मैं ये याद दिला दूं कि इस स्थिति में वर्कर्स जो हैं वो रिस्क पे हैं और उतनी ही रिस्क पे जितने सब स्टाफ है जो काम कर रहा है वहां पर, जो रेस्क्यू टीम है वो उतनी ही रिस्क पे है। तो बोथ आर एट रिस्क, अंदर जो उसको रेस्क्यू करना है और जो रेस्क्यू करने वाला है, बोथ आर एट इक्वल रिस्क। सो वी हैव टू केटर फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल दीज पीपल एट द सेम टाइम। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी, जैसे मैंने बताया कि टाइमलाइंस ले जान करना सही नहीं होगा, मगर फासले काफी, परसों रात से काफी फासला अंदर बढ़ चुका है। 22 मीटर पहले था, तकरीबन 45 मीटर तक पहुंच गया था कल रात को। उसके बाद और प्रोग्रेस हुआ था जब तक कि ये बाधा पड़ी थी। सुनने में आया है कि अभी दोबारा थोड़ा रुकावट आई है, उसको दूर की जा रही है उस रुकावट को। तो ये रुकावटें 10, 12 या 15 मीटर जो आपकी रह गया है उसके अंदर 2, 3 या 4 दफे और आ सकती हैं, और ये वही कार्रवाई आपको रिपीट करनी पड़ेगी पूरी। जो ऑक्सीएसिलिन के साथ आपने गर्डर्स को काटा है या क्या मालूम सामने कोई कंक्रीट का ब्लॉक आ गया है, जो कुछ भी करना है आपने उसको दोबारा करना पड़ेगा, तो उसमें वक्त लगेगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है डिले होता रहेगा, मगर सरकार की तरफ से जो बाकी दिशाओं से कोशिशें होंगी उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। दैट वी विल कंटिन्यू। सुविधाएं बन गई हैं, जहां पर 2000 लीटर पानी हर घंटे के लिए चाहिए था, उस दिशा में वो बंदोबस्त हो गया है। उसका जो ड्रिफ्ट चैनल, एक ड्रिफ्ट तरीके से जो काटना था, स्क्रैप करना था टनल का जो कोने जो थे उनको, वो काम भी शुरू हो गया है। कोर ऑफ इंजीनियर्स आर्मी की वहां पर है, वो फैब्रिकेशन भी शुरू हो गया है, जो इक्विपमेंट वो फैब्रिकेट कर रहे हैं इसके लिए। ब्लास्टिंग का काम उस तरफ से, बरकोट की तरफ से ब्लास्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। तकरीबन 8-9 मीटर का एक्सेस भी बन गया है वहां पर। तो ये सब तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऊपर से 6 इंच की पाइपलाइन, एक ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन लगाने के का भी काम शुरू हुआ है।
क्योंकि इसमें रिडंडेंसी होती है। अभी आपके पास एक 6 इंच की पाइपलाइन है, एक 4 इंच की शाफ्ट है, तो अगर एक और 6 इंच की पाइपलाइन आ जाए तो और भी अच्छा होगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, आपके पास रिजर्व के तौर पे एक और एक्सेस रूट लॉजिस्टिक्स के लिए बना रहेगा। बात आई आखिर में पोस्ट रिकवरी, या आप रिकवरी की भी बात कर सकते हैं, रेस्क्यू की भी बात कर सकते हैं कि जब थ्रू एंड थ्रू हो जाएगा तो ये इनको कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए पिछले 10-12 दिन से एनडीआरएफ वहां पर है, 2 टीम है, डीजी एनडीआरएफ वहां खुद आज मौजूद हैं, आईजी एनडीआरएफ कल थे वहां पर, और रिहर्सल प्रैक्टिस जारी रही है ऑल दीज 10 डेज। हार्डी लोग हैं ये हमारे एनडीआरएफ के जवान, ये जानते हैं तरीके। इम्प्रोवाइजेशन क्या है, स्ट्रेचर्स के ऊपर पहिए लगाकर स्ट्रेचर्स को ऊपर नीचे खींचने की का अभी रिहर्सल किया है, क्योंकि सबसे तेज तरीका होगा कि आप स्ट्रेचर भेजिए अंदर, इधर से तार बांधिए या रस्सी बांधिए, उधर से रस्सी बांधिए, स्ट्रेचर के ऊपर एक वर्कर को लेटाइए और इसको खींचिए पहियों के जरिए। अगर आप कोई अड़पन आती है तो फिर क्रॉलिंग करके, अगर अपने बल पे क्रॉलिंग करके आना पड़ेगा 65 मीटर, तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा और उसमें ख़तरा भी होता है कि कोई किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को साइकोलॉजिकली कोई असर हुआ है, तो इस तरह से उसमें अड़पन आती है। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका जो है स्ट्रेचर्स का वो अपनाया जाएगा और उसके अंदर कोई अड़पन नहीं आएगी, बीच बीच में इतना स्मूथ पैसेज नहीं होगा पाइपलाइन के अंदर, मगर कोशिशें इसके लिए पूरी जारी रहेंगी। जब ये रेस्क्यू हो जाएगी, जिस वक्त भी हो जाएगी, आप इमेजेस देख रहे हैं, टेलीविजन पे भी बहुत इमेजेस आ रही हैं कि वहां पर सबसे पहले मेडिकल, एक तो पहली चीज उनका मेडिकल चेकअप होगा, और कोई सीरियस केसेस हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अपने एविएशन रिसोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स को रिक्विजिशन दिया गया है, कंफर्म रिक्विजिशन है कि वो जल्द से जल्द वहां पर आ सकते हैं, हवाई जहाज लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर, उनको ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। बाकियों के लिए जहां तक मैं काउंट कर रहा हूं 41 एम्बुलेंस शायद वहां पर आ गई हैं, मतलब हर वर्कर के लिए एक एम्बुलेंस है, उसके अंदर अटेंडेंट, उसके अंदर शायद उसका रिश्तेदार, अगर वहां पर साथ में उसके कोई रिश्तेदार है वो सब उसके साथ जा सकते हैं, इंडिविजुअली जा सकते हैं वहां तक, ऋषिकेश तक, और उनको एडमिट करके वहां पर उनकी डिटेल मेडिकल चेक करना पड़ेगा इसका। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजों के साथ, और खास तौर पे ये ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंटली ये पूरी खबर दे रहे हैं, तो उम्मीदें काफी रेज हुई हैं और दिलासा मिली है, और जितने वर्कर हैं अंदर, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जागृत हुई है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है, उससे और ताकत आएगी उनके अंदर जो अंदर फंसे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाल ही में अगले कुछ घंटों में या कल तक या जब भी है, तो ये हमें इसके अंदर कामयाबी इस ऑपरेशन में मिलेगी। आपके कोई सवाल हैं अगर इसके ऊपर, खास तौर पे आखिरी चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मदद के लिए तकरीबन 4-5 फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं जो मौजूद हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया और इत्यादि देशों से। उनका रहना वहां पर हमें और दिलासा देता है और सपोर्ट देता है। इन सब का बहुत तजुर्बा है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। अंडरग्राउंड कार्रवाई जो है, अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर, अंडरग्राउंड स्पेस के अंदर काम बहुत इन्होंने किया है, तो वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा जो है वो ला रहे हैं और एक्सपर्ट एडवाइस हमको लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। We'll begin from the third row. Follow me. So, Polemy from India Today, you did mention about the fact that there seems to be some sort of halting in operations right now at the site. What has caused this? If you can just clarify that, sir. It's not the first time it's happened. This is perhaps the third time it's happened. And no one is expecting that this operation is going to go without obstacles. जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है कि बाधाएं तो आएंगी आपके सामने इस तरह की जियोलॉजी में, और क्योंकि वहां पर डिस्ट्रॉयड एक सबसाइडेड टनल की छत है पूरी वहां पर, उसके अंदर, तो नेचुरली दीज ऑब्स्टिकल्स विल बी देयर एट द मोमेंट।
शुरू में जब जो ऑब्स्टिकल आया था 16 तारीख 17 तारीख को, उसको तो हम पार करके और 22 की रात से दोबारा शुरू कर दिया है. Again, yesterday an obstacle had come in the form of the iron girder, which has been cut, as I told you, with the help of cutters, iron cutters. अब जो है कुछ और सामने कोई some kind of an obstacle has come and the work had stopped, but I am told that the work has just about resuming. We are not certain as to what kind of an obstacle had come there. I am not going into this, and I don't think you need to either go into the nitty-gritties of the technologies which are happening, the obstacles which are taking place. आपको फिक्र होनी चाहिए वक्त कितना लगेगा, बहुत आपका वाजिब सवाल है जो है कि कितना वक्त लगेगा, and we are explaining to you all the time. But the exact technologies of what is happening inside those pipelines, even I don't know. वो जो workers हैं हमारे वहाँ पर, they are doing an immense job. They're all very trained workers, and they are the ones who are using all this equipment, and there's no dearth of equipment. No dearth of equipment there at this time. There has been something which is obstructing the movement of the auger, but if you would like to explain. It is the same lattice structure जो ऊपर टनल की छत से गिरा है, वो उसी तरह के समय समय पे आ रहे हैं. इनको समय समय पे ऑगर को थोड़ा पीछे करके इसको टीम भेज के इसको काटा जा रहा है. फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, कभी 1.8 मीटर आगे बढ़ते हैं, कभी 1.2 मीटर आगे बढ़ते हैं. तो we have all the technologies, we have all the skilled manpower, we have all the machineries. जैसे सर ने कहा ये जियोलॉजिकली अनसर्टेन है, तो इसमें कितना समय लग रहा है वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हम एक डेफिनेट स्ट्रेटेजी के तहत अपने स्किल और मैन पावर की बदौलत हम इसमें आगे लगातार बढ़ रहे हैं. ऑपरेशन चल रहा है हमारा. सॉरी, कम अगेन. कल हम 45 मीटर के आसपास थे, इसके बाद आगे हम 2-3 मीटर और बढ़े हैं और लगातार हम इसमें टोटल मग जो गिरी है वो 62 to 65 meters is what I learned. You should probably confirm that. 62 to 65 meters. 60 के आसपास है. It's simple mathematics. मैंने कहा कि 45 मीटर अगर चौहान साहब कह रहे हैं 45 मीटर हो गया है और 62 से 65 मीटर है डिस्टेंस, तो तकरीबन 17 से 20 मीटर तकरीबन रह गया है. अगर आप परफेक्ट कंडीशंस को देखें तो 4 से 5 मीटर पर आवर होना चाहिए ऑगर की कार्रवाई. तो आप समझिए कि 4 घंटे में हो जाएगा. मगर काम ऐसे नहीं होता है. काम होता है कि आपने थोड़ा ऑगर का काम किया, ऑगर हीट अप ही होता है, उसको फिर आपने निकाला, उसका एंगल सही किया आपने. दिस इज अ वेरी टेक्निकल वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन. We'll take Sir Rishi from the Hindu Business Line. One clarification: this horizontal drilling that is happening through the auger, which started on 16th, I think. It started earlier. Started earlier. 45 meters has been done. Girder had come, which took more of the time. Are you anticipating more debris going ahead? Because till 17 meters is left, and as you said earlier, that a clear idea is not there how much and what sort of debris is there. So do you anticipate, sir, that while we go this 17 meters, would we still find debris? There's no doubt about it. Your assumption is absolutely correct. I'll pass it on subsequently to Chauhan Saab to explain to you the technology of it. But as I pointed out, 17 मीटर अगर मैं कहता हूँ 17 से 20 मीटर है, तो what is this debris? Debris तो वो ऊपर से जो छत से जो गिरा है, वो छत क्या होती है टनल की? There's a lattice work there. Iron girders का lattice work है, ठीक है? There's concrete, thick concrete which has fallen down, and that is solid concrete absolutely, which has to be cut. Now at what angle has it fallen? Is it actually in the way of the auger? के side हट गया है, एक जगह आपको मिल गया है, then does not mean that every meter you are going to find it, right? So you may make very quick progress and suddenly come to a halt. Probably 3-4 घंटे आपको काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद you move and you make good progress. So this is how this whole process will continue. It may take you the better part of the next 1 day, it may take you 2 to 3 days to do it. Definitely, definitely. If all goes well, absolutely. If all goes well, absolutely they'll be able to reach. Then the process will start of the actual rescue work. Not, don't consider that that is a cakewalk.
Yeah, it's not a cakewalk. But as sir is saying, it depends upon the situation. Yeah, Because all things, हाँ, yeah, but all things going well. Even one obstacle Deepak, you go have ahead. to understand that agar taking out agar takes 2 hours, then sending a person inside, as sir is saying, one cannot work for a longer hours, and then again sending agar inside, it takes time. Yeah, the next one, Deepak. Sir, I am Deepak from Times of India. Idhar se, sir. Sir, maybe you will not take it otherwise because now people also want to know. That's why I'm asking. One thing that there are some reports in some Hindi newspapers, local newspapers, that ये जो मशीन आप लगाते हैं, वो दांत वाले से बदल कर आपको त्रिशूल फॉर्मेट में कुछ लगाए हैं. Is it true that the machine that is used to drill has also been changed to meet the conditions? That is number one. Number two thing, is there also a proposal to put insert after 900 you have gone for 800? Also, if needed, are you ready for even putting 700 meters so that you can to reach there quickly? And third thing, don't mind, sir, you are saying that we should not jump to timelines, but your own officials who have been jumping to timeline yesterday by 11:30 in next 3 hours, people who are, I should not say responsible, like someone who is from private sector, from some other company, giving bites to all TV channels that agle 4 घंटे में हो जाएगा, 8 बजे तक हो जाएगा. You should also put little bit of check on them. Before passing it on to Chauhan Sahab to talk to you about the first 2 parts of the technical questions, let me reassure you once again. First of all, you have the full liberty. Media has all the liberty to question us on this, okay? Even with the advisory, I have kept on saying that you can say what you wish, but question us on anything you so wish, right? But an important thing, that in these kind of operations, even the officials who are there perhaps are not realizing it. Many of them are not media savvy, should I say. Wrong word to use, but media savvy. कि media के सामने आकर इस आसान नहीं होता बात करना इतना. मगर so some people get carried away, tempted to say that there is a definition, and there is an air of expectation and excitement when you are on the field site. You can ask me as a military man, if I'm sitting in a headquarters and sitting in an operational situation, my temperament is different. So what people are there are a little more excited and telling you, we are got a stand-back position and we are telling you the reality here. Take it, that good, very nice, we are very happy. If we can do this in 2 hours, 3 hours, so be it. But let's prepare the nation for a little longer haul. That is the more mature way of looking at operations of this kind. No, there's a technology. I will not go into the engineering design of the agar blade, what shape it has taken place. The second question is about it's a telescopic design. That initially we went for the 900 mm dia, later on 800 mm dia. So right now, as far as the force is concerned, we are finding it okay. But if the situation arises, at that time, team will take a call. Yeah, please go ahead with your question. Sir, I'm Aditi Tandon from the Tribune. Just taking a cue from what you said a while ago, you said that the operation might keep getting delayed. You also said that we should prepare the nation for longer timelines. Can you give us a range of timelines which will be a fair assessment of attached timelines to this rescue operation? Because this morning, DG NDRF, who's not a private person, who has a fair idea of where things stand, has said that if all goes well, we will be able to rescue the workers by tonight. Very important word which you used, if all goes well. Very important terminology. Yeah. So, okay, nothing wrong. What you're saying is absolutely pertinent. If all goes well, I gave you the rate of advance. An auger theoretically, drilling through, moving through, no obstacle comes in the middle, no rock fall, no concrete, and no iron girder in the middle. 4 to 5 meters per hour. We should be able to achieve this in about 5 hours, maximum 5 hours. Sir, also it takes time because agar drilling is one part, pushing the pipe, 6-inch pipe, because the welding takes 4 hours. Yeah. Connecting the 2 pipes, it takes 4 hours to the welding around the whole circle. And then it takes 4 to 5 hours. Each pipe and each segment of the pipe is 6 meters. 6 meters. 6 meters. 6 meters. Right. So there are at least 3 segments of the pipe which has still got to be welded. So agar drilling may do 4 to 5 meters in an hour. But pipe pushing again 4 hours. Then after again we have to add another pipe, another 4 to 5 hours.
So it's a time-taking process. Sir, No, therefore, let's complete your answer. I mean, I have to be fair to you. I have to be fair to you. 4 to 5 meters per Keeping hour. all this in mind, ideally, by tomorrow midday, you should definitely be able to reach the spot, as I told you, without any obstacles in your way. This is purely through process and then proving. It's not that you have gone through and you say everything is hunky-dory. You have to always prove it, that there is no danger, there is no, vibration and things like that which are taking place. Then at the same time, keep in mind the other options. They can extend to as much as 45 days. There are those options by blasting, by sideways drilling through the mountainside. All that, it can go as much as 45 days. And that is also in ideal conditions without any obstacles being encountered. सर Yes, go ahead. ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से सर मेरा सवाल ये है कि दोपहर में जैसे खबर आई थी कि काम रुक गया है, जो परेशानी आई थी, अभी क्या स्थिति है, क्या काम शुरू हो चुका है अगस्त से? और दूसरा सवाल ये है कि आपने 2 दिन पहले बताया था कि 4-5 ऑप्शन है जिन पर काम कर रहे हैं, ऊपर से भी और दूसरी साइड से, तो इससे कम टाइमलाइन वाला और कौन सा ऑप्शन है जो ऑगर के अलावा जो कम टाइमलाइन वाला हो, जिसके जरिए काम हो रहा हो? थैंक यू। John Saab will tell you about the other options. I've just told you that 4 और दिशा से हो रहा है, कोशिशें हो रही ये सभी हैं, शुरू options भी हो गया है. इनफैक्ट there's a 6th one जो ड्रिफ्ट वाला है, वो भी उसके अंदर शुरू हो गया है. He will tell you the सर details. सभी ऑप्शंस की तैयारी हो रही है, काम शुरू. जैसे टेहरी साइड से हम लगभग 10 मीटर आ गए हैं उसमें. जो बीआरओ ने बड़ा कमेंडेबल जॉब किया, 48 घंटे के अंदर उन्होंने रोड बना दी जिससे कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और आरवीएनएल जो है अपना काम कर सके. और अब वो ओएनजीसी जहाँ से काम करेगी उसके लिए वो सर्वे कर रहे हैं, और ओएनजीसी को भी उसको 300 मीटर तक जाना है, तो वो भी एक लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जियोलॉजी अच्छी है और कहाँ है. तो सभी दिशाओं में काम चल रहा है, लेकिन ये अगर वाला हॉरिजेंटल ड्रिलिंग जो सिरक्यारा से हो रही है, ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट बैट है, और अभी हम इसी में हम जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. Yeah, we take. उनकी अलग-अलग टाइमलाइंस हैं, बेशक उनकी अलग. I just gave you a range of timelines, 45 days तक का है उसका, to reach inside. जो टेहरी साइड से आएंगे वो मैक्सिमम है, वो उसमें जो है 480 मीटर उनको जाना है. They are achieving about 8 meters a day. Yes, sir. About 8 meters a day, 450 meters जाना है उनको. अब बाद में सर वो 10-15 मीटर भी हो जाएगा. तो टेहरी साइड से सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा. सतलज से वर्टिकल ड्रिलिंग जो होगी उसमें 10 दिन का समय लगेगा, और इसमें जो है जैसा सर बता रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो बहुत जल्दी इसमें हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग. Yeah, we take 2 questions from behind. Please go ahead. Sir, I'm Arun Dhanta from CNN News-18. My question is that you said various technologies and avenues being used. As we inch closer to those workers, how riskier it could become, and if it is more riskier as we go close to them, any sort of instructions which you are passing to the workers that how if debris fall, any instruction that how they can actually, anything that they can do? Before passing on the question on a technical aspect, I would like to say that in any boring when you do, top down, horizontal, you start with a certain dimension which is bigger, and that dimension starts getting smaller as you go inside. So it starts with about 900 millimeter, you are going to end with less than 800 millimeter inside. Correct me if I'm wrong, this is normally what always happens. So at the end of the day, they may have to come out through a 70 centimeter or a 700 millimeter, 750 millimeter pipeline through which they will have to come out from there. That is not such a problem. 2.5 feet, 2 feet for a human being is a good enough thing for him to come out. The important thing which you have to keep in mind is that these workers are very hardy people, experienced. Not all of them have got 20 years of experience, but they have been working in these conditions. They can survive on very little. Their energy levels are high. And now that you have got this logistics line, psychosocial advice to them, etc., obviously the NDRF is also giving them all the advice on how they should prepare themselves for the eventual rescue. The manner in which they would have to lie down on the stretcher and things like that. For all you know, knowing our NDRF,
some person will probably go inside himself and help them to truss them up on a stretcher and pull them out. You can't rule that out. So that way these preparations are going on completely, that once the access has been made, fastest way we should be able to get them out from there. Would you like to add to that? जैसा मैंने पहले परसों जो बताया गया था कि वो जो टनल के अंदर है वो सीमेंट कंक्रीट वहाँ हुआ है, तो वो उसके नीचे सेफ हैं, और जब भी उनको खाने की सप्लाई होती है तभी वो जो है वो डेब्रीज के पास में जाते हैं, अदरवाइज दे रिमेन बैक साइड. दे आर वेल हाईली ट्रेन्ड, दे आर 2 फोरमैन हैं, बाकी जो लेबर है दे आर हाईली ट्रेन्ड पर्सन्स. सो उनको तरीके मालूम है. विशाल जी से मेरा सवाल है कि इस हादसे के बाद क्या देश भर के तमाम और भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या टनल्स हैं NHAI के, उनकी जांच के भी आदेश दिए हैं, इंस्पेक्शन क्या कराया जाएगा, कुछ इस तरीके के आदेश दिए गए हैं? देखिए ये सतत let me give you one thing on post disaster. एक सिस्टम है, NDMA के अंदर सिस्टम है. The technical part of it will be covered by the Ministry of Road Transport and Highways and the various agencies under them. NDMA का ही सिस्टम है कि हर इवेंट को, कोई हादसा कहीं होती है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ आपका, we had a whole analysis and report which came down to us. Ministry of Railways came and gave us a whole presentation on it for better understanding, क्योंकि हमारी एपेक्स एजेंसी है, वो समझती है डिजास्टर्स को, कैसे डिजास्टर्स के अंदर किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, and we are the ones who write the guidelines, give the guidelines. You are aware we have got many guidelines from the NDMA which have been issued out over a period of time. तो इसके अंदर भी definitely event, post event एक analysis की जाएगी disaster के बारे में. The technical aspects will invariably be addressed by the ministry and their organizations to see where things went wrong, where can be improved. मैं तो लोगों को ये बता रहा हूँ, basically an example I'm saying is, if a civil aviation aircraft crashes with a couple of passengers, do we put an end to all flying? We don't. We know that there are mistakes which can be made. Technologies are challenging. 100% and more can never be assured. But here, I think the technologies are sufficiently developed, and they are developing. It's an on-the-job training all the time which is happening. तो मैं समझता हूँ कि post-event analysis के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, right from the highest levels of government. Sir, we have a understanding with the Kokad Railway Corporation, which has lot of expertise in making tunnels. So we keep on reviewing all this tunnel work which is happening all over the country, tunnel work, bridge work, etc. And as sir is saying, we'll continue to improve that. And sir, today we'll, I think, restrict to the rescue part. Yeah, that's right. सर मेरा नाम कुमार कुंदन है. मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मौसम को लेके कोई परेशानी वगैरह हो रही है क्या वहाँ पे? मौसम को लेके कोई परेशानी? मौसम, yeah, बीच में there was a report of a possible earthquake which had happened, very low intensity, low on the Richter scale, which perhaps it was missed by everyone at that particular time. It may have happened, but that's not a part of the climate or the weather pattern. This morning, what I was learning from workers on the site, people who were speaking on television more than anything else, it was 7 degrees or so in the morning at about 8 o'clock, and heading to be about 14 to 15 degrees by midday. It's a 6,000 feet का वो altitude है. 6,000 feet Nainital, Lansdowne, Missouri की height का है. These places are cold today, no doubt. Inside, it must be fairly warm actually. Inside it must be fairly warm. There is a apprehension that उनको बाहर निकाल कर, if early morning या रात को निकाला तो immediate, effect of the cold could sort of affect their health, etc. There is enough medical staff there. Enough medical staff. I told you there are 41 ambulances there, and अभी आपने television images देखी होंगी, वहाँ unload हो रही थी बहुत सी curtains and, temporary field hospital बनाने के लिए. I think initially it was a 10-bedded hospital and even more, which is being created there, so that they can at ease, they can all have their medical checkup there. So कपड़े हैं उनके लिए वहाँ पर तैयार. They can be well trussed up, blankets, etc. So I don't think that whether
at the moment is a challenge. If it starts snowing tomorrow, if it starts raining tomorrow, it could be a challenge. But I don't think at the moment it's a challenge. I'm Ashmi from The Print. My question is for Mr. Chauhan. Sir, right now the rescue mission is a top priority, and I mean all of us are praying that the 41 workers come out safe and healthy. But having said that, now that the rescue mission is also nearing its end, so in the ministry, in the road ministry, because you are from the NHAI, I mean, has there been any relook at what led to the tunnel collapse? I mean, was the contractor at fault? I know, I mean, it's not a blame game or anything. Not at this stage, but No, yes, at a we will later confine date, this surely briefing we'll to go the into rescue this. operation now. I'll take the last question from here, please, 100. The third row. नमस्कार, my name is Sandeep from Bartman newspaper. ये 41 आपने जो बोला, all if all goes well, tomorrow midday to 45 days तक हो सकता है उनका वहाँ पहुँचने में. तो निकलने में कितना टाइम लगेगा, और जो 41 लेबर्स है उसमें बंगाल का 3 लेबर्स है, उसका थोड़ा डिटेल अगर देंगे तो बहुत अच्छा है. थैंक यू. What exactly will they want? Get them out. देखिए इसका estimate मैं मतलब I can give you a range of time. 41 लोगों को निकालना है, और जब एक्सेस बन जाएगा तो मेरा अंदाजा है कि एनडीआरएफ उस वक्त एनडीआरएफ का काम चलेगा, शुरू होगा. चुनौती सबसे बड़ी एनडीआरएफ की होगी उस पर, despite and also all the technical staff of the NHI, NHDICL, everyone will be there to ensure the safety of the pipeline. Once it has been proved, तकरीबन 1-2 घंटे में 1-2 लोग शायद जाएंगे ऊपर नीचे, experienced people. After that, 65 meters pulling, if the stretchers are comfortably pulled, it should take the better part of about, less than the outside limit, 2 minutes to pull out a stretcher, 2 to 3 minutes to pull out a stretcher. तो 40 लोगों के लिए अगर आप 3 मिनट का भी देखें, और फिर देखें कि स्ट्रेचर को भेजना है अंदर और उसको दोबारा ट्रस अप करना है, किसी को उस पर लिटाना है, it will take time. I think to my mind 3 to 4 hours should be an easy estimate. But this is a rough estimate. 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इसके अंदर, definitely. Yeah, thank you, General Saab. I think with that we are concluding this media brief, as usual. Yeah, you can tell me, yeah. Yeah, we are aware. I've spoken to many of their relatives yesterday. कल मैंने NDTV पर बात भी की है उनके साथ, सबके साथ. Okay, thank you very much. Thank you General for your Saab. time, and I end the conference by once again thanking you. Yeah, and It's been a great effort by the media. You are the ones who have kept the hopes going and kept it very, very professional. Yeah. Thank you very much. We'll be putting out the media brief, as usual. Thank you very much.